Hello class 10. Today we have already just presented here with a new chapter we are discussing earlier, that is refraction through lenses. We have already discussed that the principal, the center of curvature, radius of curvature, and the principal axis. Today we are going to study about the optical center. Okay, what is optical center? Optical center is a point on the principal axis of the lens, okay, such that any ray of light passing through it, this point emerges parallel to direction of incident. Okay, it is marked by the letter O. The optical center is thus the center of the lens. Means this is the actual definition. Okay, optical center. It is we already know that the optical center always lies within the rectangular slab. Optical center lies at the center of the lens, and center of the lens is what? The just rectangular slab, and whenever incident of light is just incident on any surface, it just emerges out at a parallel. Emergent ray will be parallel to the incidence ray. It may be happen that some of the lateral displacement it is just having, but still the emergent ray is parallel to the incident ray. Okay, and that center is called as the optical center. But okay, just see here the actual diagram. It has been shown here that it is not happening that at the same time when a ray of light is just coming incident on this normal, it is just going just a rarer medium to denser medium. It is just going towards the normal, and after that from the denser medium to rarer medium, it is just going out. It will be away from the normal. So while all these processes taking place, it is just certain displacement is there, okay, in their process, in their path. It is displaced from its path. Okay, means there is some angle of deviation. Okay, there is angle of deviation, but still here, see here, and again we have just discussed here that the same process is happening here, that whenever a ray of light is just coming from the rarer to denser medium, it just goes away towards the normal, and from denser medium goes away from the normal. So there's a little bit some displacement is there. Okay, but actually what we know about the optical center, generally the lens is very thin. Okay, and we are neglecting this lateral shift, this displacement. Actually the lens is very thin, and that is the main reason why we are just neglecting, or lateral shift is small enough so that we will ignore it. Therefore we are ignoring the lateral shift. Now what will be the definition of just so its definition will be what? A ray of light directed towards the optical center of a thin lens can be considered to pass through the lens undeviated. Now, this is a just condition. Okay, we know about the optical center that whenever a ray of light is just passing on it, it just passes undeviated through it. Okay, but actually we know what is happening. So this is the condition. So optical center is a thin, what we know about this, the optical center of a thin lens is the point on the principal axis of the lens such that a ray of light directed towards it passes undeviated through it. So it is the definition, okay, of optical center. And this is the principal focus. What we know about the principal focus, we know that any lens, because lens is made up of two spherical surfaces, already know that there are two center of curvature, two radius of curvature, one optical center is there. So obviously it will be two focal length also, or a focal principal focus also there. Okay, f1 and f2. If medium is same on the either side of the lens, the two foci are situated at equal distances from the optical center. Means
If you are taking it as the same medium is same in that case, and obviously the medium is same in that case, the two principal focus are situated at equal distances from the optical center, f1 equal to f2. First focal point, what is the first focal point? Just see here the diagram, it has been just shown here for the just convex lens and the concave lens. What happens that whenever a ray of light is just coming from the f1, okay, it just strike incident on the lenses and it just passes parallel to the principal axis. This is what is of f1. Okay, and what about the just what for the concave lens? Whenever a ray of light is just incident, okay, it just passes parallel to the principal focus. But if we just diverge, if we just stretch it by dotted line, okay, it appears to meet at f1. Yeah, appears to meet at f1. This is f1. Okay, so this is what the condition is. For a concave lens, the first focal point is the point f1 on the principal axis of the lens, such that the rays of light coming from it after refraction through the lens becomes parallel to principal axis of the lens. This is what I have discussed. And what about this one? Just see here. For a concave lens, first focal point is the point f1 on the principal axis of the lens, such that the incident rays of light appearing to meet at it. We are just standing forward and just meeting at one place, and this is what the f1. Okay, so this is what the conditions here. Now see here the second focal point. The second focal point is what? You can you see it. Whenever a parallel beam of light is just incident on this lens, it just converges to one single point, f1, f2. This is what when a parallel beam of light is just parallel to parallel beam of light is incident, it converges at some particular point f2, and this is what here in this case also. When I parallel is just rays of light is incident on this, it diverges out. Okay, and when we stretch it backwards, okay, this is f2. So what will be the definition in this case? It will be the for a concave lens, the second focal point is the point f2 on the principal axis of the lens, such that the rays of light incident parallel to principal axis after refraction from the lens pass through it. Just passing through it, it is converges out. Okay, this is what the f1 and f2. And the new concept is a focal point, this plane. Okay, what is focal plane? A plane which is normal to principal axis passing through the focus. What is a focal plane? A plane which is normal to principal axis. Okay, means focal plane is that plane which is acting at right angles to the focal plane. Okay, passing through the focus, but passing through the focus. This is called focal point. First focal point, second focal point. First focal plane, second focal plane. A plane passing through the first focal point and normal to the principal axis of the lens is called first focal plane. This is what definition. And what is a second focal plane? A plane passing through the second focal point and normal to principal axis of the lens is called as the second focal plane. Okay, just see here focal length. What is focal length? What is the focal length? The distance of the focus from the optical center, only this much. What is focal length? The distance of focus from the optical center. Just imagine it, this one. This is optical center and this is focus. So whatever the distance from the O to f2, this is what focal
length. Okay, this is focal length. And there are two kinds of focal length also, first focal length and second focal length. The distance from the optical center O of the lens to its first focal point is called f1, and the distance from the optical center O from the lens to the second focal point is called as the second focal length. This is everybody know. Okay. ओके, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से जो मैंने फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट बताया उस पर ये फिगर, ठीक है। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तब तो वहाँ पे फोकस पे हमारी इमेज बन जाती है, ठीक है, फोकस पे जाकर के मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल ना हो करके थोड़ा टेढ़ा ऑब्लिकली यदि ये पैरेलल बीम आती हैं, ठीक है, ऑब्लिकली मीन्स विद सम एंगल। ओके, तो पैरेलली यदि पैरेलल कुछ इस तरीके से टिल्टेड आती हैं और इस पे करती हैं, तो इमेज बनती फोकस पे ही है। इमेज जो बनती है वो फोकस के प्लेन पे बनती है। यानी देखिए यहाँ पे फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन इज दैट plane which is acting at right angles to the, which is making a 90-degree angle with the, or we can say that a focal plane is a plane which is acting normally, which is falling normally on the principal axis passing through focus। देखो ये यहाँ पे आप लोग देखिए कि किस तरीके से F2 का जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ना, ये F2 से पास हो रहा है, और यही प्लेन जो है ना, ये क्या है, इस एक्सिस से प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मली भी है ना। तो दिस इज व्हाट द फोकल प्लेन। और यदि हम एक्सटेंड करें तो इसी पॉइंट पे, इसी के प्लेन पे जो हमारा इमेज बनेगा कहीं नीचे, ठीक है। तो whenever rays of light falling obliquely on the lenses, the image is formed at the plane of the second focal point, principal focus, ठीक है। तो प्लेन पे बनेगा ना कि फोकस बनेगा, और इंसिडेंट पैरेलली होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें एकदम फोकस भी बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। और कॉन्केव लेंस के केस में भी यही होने वाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जब हम लोग इसमें बैकवर्ड लेके जाते हैं, ये लेंस है ऑब्लिकली इस पर डाइवर्ज हो रहा है, तो ये इस एंगल से डाइवर्ज करता जा रहा है। लेकिन जब इसको हम लोग बैकवर्ड खींच रहे हैं F2 पर, ठीक है, तो ये प्लेन है, ये प्लेन फोकस से होकर गुजर रहा है ना। तो यहाँ भी जो इमेज बन रही है वो हमेशा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, लेकिन फिर भी बनेगी प्लेन पर ही, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के प्लेन पे ही बनेगी। अब फोकल प्लेन में बताया है कि एनी लाइन विच इज नॉर्मल ऑन द प्लेन विच इज नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पासिंग थ्रू फोकस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ जो है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर, ये दो चीज़ों पे आधारित होता है, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस रिलेटिव टू सराउंडिंग मीडियम। Refractive index of the material of lens relative to its surrounding medium. If a lens is placed in water instead of air, its focal length increases. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आधारित होता है ना। हम लोग जानते हैं कि वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है। जब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा तो उस केस में यदि हम ये सारी प्रक्रियाएं वाटर में लेते हैं एयर की अपेक्षा, तो उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होगा। यानी जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा फोकल लेंथ भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ लेंस, अ थिक लेंस हैज लेस फोकल लेंथ एंड अ थिन लेंस ऑफ द सेम मटेरियल। मीन्स जो थिक लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कम होता है और थिन लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है ना।
ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग, थोड़ा सा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि लेंस का कुछ पार्ट, इफ़ अ पार्ट ऑफ लेंस इज़ कवर्ड, उसको कवर्ड कर लिया जाए, तो फोकल लेंथ जो है वो हमेशा अनचेंज, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ लाइट है, जो प्रकाश पुंज है जो एंटर कर रहा है लेंस में, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घटेगी, है ना, इंटेंसिटी थोड़ी घटेगी, है ना, और इमेज जो है थोड़ा फेंट आएगा, मतलब ना ब्राइट नहीं आएगा, लेकिन उसकी पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, मिडिल में थिक होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, और अपने जो साइड्स कोने हैं वहाँ पे थोड़ा पेरीफेरी पे थिन हो जाता है। और कॉन्केव लेंस क्या होता है, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द पेरीफेरी, यानी कोने पे, पेरीफेरी पे जाकर के मोटा हो जाता है। इट कन्वर्जेस द इंसिडेंट रेज टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। सही बात है, ये जो है लाइट जो है जब भी लेंस से इंसिडेंट होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कन्वर्ज हो करके F2 पे मिलती है ना, F2 फोकस पे मिलती है। इट डाइवर्जेस इंसिडेंट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से रेज को कॉन्केव लेंस डाइवर्ज कर देता है ना, और appears to meet at the F2 बैकवर्ड खींचेंगे। इट इज़ रियल फोकस, इट इज़ अ रियल फोकस, इट इज़ अ वर्चुअल फोकस, इट इज़ अ रियल फोकस, ये इसका फोकस रियल होता है, इसका वर्चुअल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं ना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका कॉन्केव लेंस है। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ कॉन्केव लेंस। तो जब भी यहाँ पे रे ऑफ लाइट यहाँ टकराती है तो डेंसर, रेयर से डेंसर में जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, फिर यहाँ पे नॉर्मल से क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, और चूँकि यहाँ पे प्रिज्म है, ये चीज़ प्रिज्म है, यहाँ भी प्रिज्म है, बीच का लेंथ जो है रेक्टेंगुलर स्लैब है, तो इट विल कम टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, यहाँ पे देखें आप, यदि पैरेलल आती है प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ से एंटर करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट इट डोंट नॉर्मल, इट इज जस्ट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो इससे सारी प्रक्रियाएं हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ज होता है, किस तरीके से डाइवर्ज होता है ना, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। So dear student, up to this level you just go through. We will meet in the next video. Thank you.